असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष व प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर नगेन सैकिया ने आज जाने माने इतिहासकार व शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर सृष्टिधर दत्त की पुस्तक का विमोचन किया। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के श्री अनिरुद्ध देव हॉल में आयोजित समारोह में शहीद कुशल कुंवर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। ये सृष्टिधर दत्त की आखिरी पुस्तक है। वे असम समझौते की क्लॉज 6 के लिए गठित जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी के सदस्य भी थे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दत्त के परिवार, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और डीवीएस प्रकाशन ने मिलकर किया। इस दौरान नॉर्थ ईस्ट लाइव से बातचीत में डॉक्टर नगेन सैकिया ने कहा कि ये पुस्तक असम के लिहाज से स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। Important book by Dr. Srishtidhar Datta, an eminent historian. So, what do you like to say on this occasion? No, the book is a very important book. Important book he has compiled because here the nutshell of the Indian freedom movement and also Assam freedom movement in Assam, both these sides have been incorporated by Srishtidhar Datta in this book, and in a nutshell, most important points will be known by the readers. Therefore, I think this book also gets good, circulation among the readers. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चंदन शर्मा ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए ये पुस्तक अहम साबित होगी। Srishtidhar Datta, sir, his book, which is published now, A Conscious History of Freedom Movement of Assam, India, with special reference to martyr Kushal Kunwar. I think this book will be a very valuable contribution to understand the freedom movement in Assam, anti-British uprising, with special reference to 1942 Quit India movement. He has written with special emphasis on Kushal Kunwar, who was given capital punishment by the British in 1942. I think this book will be a very valuable contribution to the younger generation to understand Assam's contribution to the freedom movement, specifically from 1942 onwards. We will introduce this book in our degree curriculum so that younger generation can understand Assam's contribution specifically in 1942 movement. वहीं स्वर्गीय डॉक्टर सृष्टिधर दत्त की बेटी सुदीप्ता दत्त ने कहा कि उनके पिता की आखिरी पुस्तक के विमोचन से वो खुश है। My heart is full today actually. We have waited 2 whole long years for this to happen. This book was my father's last wish. So we put in everything that was possible into this, and finally the book has seen the light of the day. We are very happy today. We are delighted to have all the distinguished guests and all the people who have supported us through this journey. We remain thankful to all of them.